witnessing here the preparations of the Mandala Puja or the Makaravilakku. The pilgrimage to Sabarimala begins from the 1st of Richigam, a Malayalam month coming in the middle of November, probably between 14th to 17th, the most important day for Ayyappan and Makarasankranti day. This day will usually fall between January 14th and 16th. On Makara Sankranti, every year without fail, sacred events occur. Firstly, as the jewels, Tiruvabharanam of Lord are transported from the old Pandalam palace to Sabarimala. A holy Garuda, an eagle, the vehicle of Lord Vishnu, circles above the precious jewels, in fact guarding them like a protector. This rare eagle is rarely seen in the midst of people for a long period of time. Yet, the auspicious bird follows the Tiruvabharanam procession, finally circling above the Sannidhanam at Sabarimala 9 times as it pays its respects to Lord Ayyappa. During this time, there is not a single star in the sky except for a special star. As the beautiful jewels are placed on the golden body of Lord within the temple, several hundred thousands devotees outside crammed into any available free space. That's what we are about to witness, and they chant Swami Sharnamayappa. But apart from the previous years, certain COVID protocols are in place. When the jewels are finally all adorned on the Lord, the star in the sky miraculously disappears. Within moments of the Lord being adorned with the Tiruvabharanam, an effulgence appears in the opposite of the hills of the Sabarimala, shining 3 times. പെട്രോൾ മുതൽ
തന്നെ ശബരിമലയും സംവിധാനവും സന്നിധാനവും നിലയ്ക്കൽ പമ്പ തുടങ്ങി ഇടത്താവളങ്ങളും ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശരണഘോഷങ്ങളാൽ ശബരിമല മുഖരിതമാണ്. പതിനായിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 6:30 മുന്ന് 18-ാം പടി കയറി ശ്രീകോവിലിന് സമീപത്തെത്തുമ്പോൾ we're witnessing Brahmasri Parameshwara Nambudri, the Melchandi of Sabarimala, who is explaining the events which have already happened and which are about to happen. He was mentioning that he was glad to see millions of the devotees of Ayyappa in and around the Sannidhanam, and also those who are watching it from around the world. And he's expecting the miraculous stars and the Divya Jyoti to appear in the skies, and the events to be passed miraculously and peacefully. And is seeking the cooperation of every devotees, the policemen and all, as well as the divine intervention of the Lord to peacefully conduct the ceremonies. മറ്റ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത് കാണാവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കും മകരജ്യോതി ആശംസകൾ നേർന്നു. എല്ലാവരെയും കലിയുഗവരനായ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. संविधान को आप देख रहे हैं. 18 सोने की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जो दर्शन के लिए भक्त जाते हैं, और वहाँ सब सख्त तरह से रक्षा का प्रबंध किया गया है. केरला की पुलिस के साथ ही केंद्र सरकार की रैपिड एक्शन फोर्स भी आ जाती है, और कोविड प्रोटोकॉल के वजह से लोगों को जितनी भी तकलीफ है उसको ना परवाह किए हुए लोग अपने आप को संभाल कर, अपने आप कोविड प्रोटोकॉल को मानकर पूरी सहगारी के साथ मास्क पहनते हुए जितना हो सके उतना कोशिश करके कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए वो लोग दर्शन के लिए आए हैं. आप देख सकते हैं चारों ओर घने जंगल में और ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये जो मंदिर है, ये मंदिर में दर्शन के लिए साल में एक बार जो मंडल पूजा के टाइम से, यानी कि करीबन अंग्रेजी का महीना नवंबर में पड़ता है, वो उसके बाद मकरविलक्कु तक, यानी कि करीबन जुलाई, आज जो है जनवरी 14 तारीख है, पूरे और एक 3-4 दिन के बाद बंद किया जाएगा. तो साल में एक बार ही आपको यहाँ का मंदिर का अंदर दर्शन लेने के लिए जो दरवाजे हैं खुले जाएंगे. तो ये 3-3.5 महीने तक दुनिया, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जैसे पास का जो राज्य है तमिलनाडु, दूसरा राज्य जो कर्नाटका है, आंध्रा है, जो भी है, और नॉर्थ इंडिया जो है, तो उत्तर भारत से भी यहाँ बहुत से भक्त लोग आ जाते हैं. लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी भक्त लोग पूरी तरह से अपना प्रोटोकॉल निभाते हुए दर्शन के लिए आए हैं. और इसके साथ यहाँ के पुलिस और यहाँ के अधिकारियों ने पूरी सुविधाएं दिए हैं कि भक्तों के लिए पूरी हिफाजत हो और उनको आसानी से बिना कोई तकलीफ के दर्शन करके वापस जा सके. अभी आप जब देख रहे थे ब्रह्मश्री परमेश्वर नंबूद्री जो प्रथम पुजारी है शबरीमला के प्रथम पुजारी है, वो उनका नाम है ब्रह्मश्री परमेश्वर नंबूद्री. उनको मलयालम में मेल शांति कहा जाता है. ये प्रथम पुजारी ने अभी आशंसा दी थी, सबको शुभकामनाएं दी थी इस साल का शबरीमला दर्शन का.
Till about 50 years ago, the pilgrimage to Sri Dharmashastra or the Sri Ayyappa Temple at Sabarimala was mostly confined to the people of the old Travancore state of South India. The road transport and the rail facilities were then very limited. Were their hearts surging with devotion, the pilgrims in the group wearing blue or black clothes and carrying on their heads Hirumudi Ketta, the package of offerings and provisions used to trek long distance in groups to reach the shrine of Lord Ayyappa. The roads are all covered with small towns, villages and long stretches of mountainous terrain, of dense forests inhabited by mostly wild animals. In those days, the maximum number of pilgrims reaching Sabarimala in any peak was a season only about 15,000. Today, the scene is drastically different. The latest estimate of their number is around 50 million. The number is steadily increasing year after year. What we are witnessing here is a Pamba Sadhya. It is offering to Lord Ganapati as well, which is not done in Sannidhanam, but this is an occasion where the Lord Ganpati, Lord Ganesh, is offered with the Sadhya. The devotee is the same, seeks the blessings of Lord Ganpati before going for the arduous task of climbing the scales. The devotion unlimited, otherwise devotion unplugged. The people here are all with devotion and ecstasy, dances away their tears. Undertake the task of climbing the mountainous terrains, neglecting the wild animals and their threats, and finally reaches the Sannidhanam to seek blessings of their favorite Lord. There exist diverse theories and views about Sri Ayyappa and his worship. Most of them dwell elaborately on the legends or historical aspects. There is no breadth of intellectual discussion on whether Sri Ayyappa is Aryan or Dravidian god, whether his form and the pilgrimage have a Hindu or Buddhist origin, whether he is a historical figure or not, and the debate, what gets neglected is the most vital, the underlying spiritual wisdom. What attracts millions to this vibrant center of divine power is neither mythological stories or historical importance, but the very personal experience of spiritual solace and harmony. In historical assessment, what is overlooked is its very essence, the blending of many positive aspects of religious concepts and spiritual disciplines that gives a broad-based practical impetus to the striving of man to know himself and to find a greater meaning to his life. The legendary and historical aspects, of course, is important, but what is more important is the personal experience of spiritual solace and harmony. How can it exemplify a temple legend? A group of pilgrims from Tamil Nadu on their way to Sabarimala reached Kollur, a beautiful and calm village nestled amidst the mountains fastnesses in Karnataka, to offer worship to the Divine Mother at the reputed Sri Mukambika Temple. This group, said to be about 25 devotees after taking bath in the holy river Saupanika, stood in rows on the bank. Their age might have been ranged from 7 to 70. They were sons and fathers, uncles and nephews, and even grandfathers. From the right end, a devotee left the row and with folded hands worshipfully prostrated before each one and took his position at the left end. This continued till each one is offered a salutation to everyone else. Grandfather fell at the feet of his grandson, father before the son, teacher before the student, and vice versa, true to the principles of Sri Dharmashastra worship.
They were taking a practical training in Advaitic wisdom, the philosophy of basic spiritual oneness, by symbolizing, negating all differentiations and recognizing the harmony of the spiritual supreme divinity in everyone and trying to identify themselves with the transcendental reality. It's a training to develop the awareness that everything, the river, the forest, trees, man, bees and everything are that which identify with the name Lord Ayyappa, which goes by the same Tattvamasi. സുഗമമായിട്ട് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചാർജിയുള്ള ദീപാരാധനയുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ജോലി ദർശനം സ്വാമിമാർ കൊണ്ടുവരികയുണ്ട്. ഈ സമയത്തെല്ലാം ചെയ്യാം. എന്താ ഈ മകരവിളക്ക് കാലത്ത് വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യ സീസൺ കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ആദ്യം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി അത് വീണ്ടും വളരെ കൂടിയൊരു അവസ്ഥയിൽ V. Krishna Kumar Warrior, the Executive Officer of Sabarimala. ദർശനത്തിനുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സുഗമമായ ദർശനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വലിയൊരു നിര കൂട്ടമാണ് നിറഞ്ഞ ശരണവിളികളോടുകൂടിയും ഭജനയോടുകൂടിയും ജ്യോതി ദർശനത്തിനും തിരുവാഭരണ ദർശനത്തിനുമായി all arrangements have been made to smoothly conduct this Makaravilakku Festival, taking care of the COVID protocols as well. പരമാവധി മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ പിന്നെ ഭയത്തോടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു തിരിച്ചല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ട യാത്രയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് സാനിറ്റൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് പരമാവധി അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കോവിഡ് കണക്ക്, ഇവിടെ ടെസ്റ്റ്, ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് കണക്ക് ഒന്നുമില്ല. കാര്യമായിട്ടൊരു വർഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. റീസെൻ്റായിട്ട് കണക്ക് പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയതിൽ കാര്യമായ വർഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. കുറേ സുരക്ഷിതമായ ദർശനമായിരുന്നു ഈ സീസൺ. ഘോഷയാത്രയ്ക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കും. अब ये सबरीमला का जो उत्सव चल रहा है उसके पीछे बहुत से ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, जिसमें से मैं जैसे आपको बताया था कि शिव और विष्णु के जन्म लेने के कारण इन्हें हरिहरा पुत्र भी माना जाता है। भगवान शिव और विष्णु से जन्म लेने के कारण सबरीमला स्वामी को हरिहरा पुत्र माना जाता है। अभी आपको दिखाया गया टीवी के स्क्रीन पर यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्णा कुमार वारियर वो बता रहे थे कि इस बार भी हर साल की तरह लोग बड़ी जोश के साथ आए हैं, बड़ी भक्ति के साथ आए हैं। कोविड होने के बावजूद भी पूरे कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए पब्लिक, ये जो भक्त लोग जो आए हैं पूरी तरह से वो कोऑपरेट करते हैं सहकारियों के साथ, उनके साथ एकदम अच्छी तरह से मिलन के साथ। और पुलिस भी इतनी मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि कहीं सबरीमला आके वापस जाने के बाद किसी को कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी बहुत कड़ी तरफ से निगहबानी करके मनाया जा रहा है। और ये ख़ास बात इसमें है कि सबरीमला में औरतों को 10 साल के ऊपर और 50 साल तक है सो औरतों को आना मना है।
witnessing here the ceremony of Makaravilakku, which is usually a devotional practice performed in respect to Lord Ayyappa as well as Ganesha, which happens at Pamba, the foot of the hills from where the artist's journey to Sannidhanam starts. We can see the lambs floating in the river and mostly in the banks of the river, in and around the steps as well. Lakhs of such lambs are lit, which is a feast to eyes, especially a believer's eyes. All symbolifies the glory of goodness, oneness, Tattva-masi, devotion and goodness. We're getting the visuals of various types of lambs lit in visuals of the adjoining hills of Sabarimala. From here, on top of the buildings, people are eagerly waiting to witness Makaravilakku. There's a miraculous light which appears from Punnambalame.
कथाओं के मुताबिक समुद्र मदन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहित रूप पर आकृष्ट होकर इसके प्रभाव से जो बच्चे का जन्म हुआ था उन्हें पंबा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। इस दौरान राजा राजशेखर ने इन्हें बड़े बहुत सालों तक पाल पोस के बड़ा किया। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लेने जंगल साल मगर सांद्री के अवसर पर पंदलम राजा महल से अय्यप्पा के आभूषणों को संदूकों में लेकर एक दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। What we're witnessing here is a procession entering the Ambalappura Temple, which is in association with the Ambalappura Pettathullal. With Pettathullal, that is it's a devotional dance performed by the pilgrims in Sabarimala. It's an important ritualistic custom of pilgrimage. The authors of the Puranas as well have noted linked mythological stories with the historical incidents to convey messages and principles. According to the Puranic view, the Pettathullal is a re-enunciation of joyful dance of the people on knowing that Ayyappa had slain the terrible Mahishi, a demoness having the form of a she-buffalo. It is believed that the word, the please, derived its name from Erumeli, that is, the please of Erumeli derived its name from the Malayalam word Erumakolli. Eruma means she-buffalo and Kolli, the please of killing. That is in order to commemorate such events that this Pettathullal is performed. As two sections of Ambalappura and Alanga. We are witnessing the Pettathullal transformed from Ambalappura Sankam. According to the historical perspective, it is also given in many books, even the Puranas, that the Pettathullal was a part of spiritual discipline evolved by Ayyappa before embarking upon his war expedition against the despotic Udayanan to liberate Sabarimala Temple from his hold. It was intended to raise a sense of all social and religious distinctions from the minds of the participants and to integrate them in the dynamic world. All of them wore blue or black clothes and smeared their faces with charcoal and other colors. They danced in abandon in a state of forgetfulness of their individual distinctions while making a conscious effort to fix their attention on the divinity of God, where they considered as a manifestation of supreme reality. While dancing and moving along with the procession, they uttered the sound Swami Tindagatom, Ayyappa Tindagatom, which is chanted even today by the dancing couple. इसी तरह इस मंदिर के पास आज आप जो देख रहे हैं मकरविलक्कु जो होने वाला है, इसका मतलब ऐसा होता है कि इस दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। घनी पहाड़ियों के कंदमाला छोटी असाधारण चमक वाली एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति घटना को ही मकर ज्योति कहा जाता है। मकर संक्रांति और उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के संयोग के दिन पंचमी तिथि और वृश्चिक लगने के समय भी अब आप जो देख रहे हैं वो है अम्बलपुरा पेटा। अब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं वो है वावर मस्जिद। ये जो सबरीमला है, इसके इतिहास में एक बहुत बड़ी सामुदायिक मैत्री भी है। वर्षों पहले यानी कि 5000 साल पहले भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता निभाने के लिए, मिलावट करने के लिए यहाँ एक सामुदायिक मैत्री का उदाहरण भी आता है। जैसे कि जब स्वामी अय्यप्पा वहाँ वावर जो भी हो, वहाँ के वो तो एक जंगल के लुटेरे थे
हर आदमी पर हमला करते थे। एक बार स्वामी का इनके साथ टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद इनके आपस में ऐसी दोस्ती होगी कि वावर स्वामी जो है उन्होंने उनके पूरे पूरे बुरे काम छोड़कर स्वामी के पास मिल गए और अय्यप्पा स्वामी वावर स्वामी दोनों मिलकर वहाँ राज करने लगे। उसके बाद भी जितने भी लोग हमला करने आए थे, जैसे कि उदयन आए थे एक बार हमला करने के लिए, तब भी इन दोनों ने मिलकर उनको हरा के भेज दिया था। और इस तरह अय्यप्पा स्वामी कहते थे कि वावर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, बस मेरे ही पास रह रहोगे। उनके दाएं तरफ एक मस्जिद बना गई जो वावर मस्जिद, नैना मस्जिद कहा जाता है उसको। वो वावर मस्जिद स्क्रीन में देखे थे आप, वो वावर मस्जिद में भी ये अय्यप्पा ये जो मंदिर का फेस्टिवल जो है, ये जो त्योहार चल रहा है, इसके अंदर ये मस्जिद के लोग भी शामिल होते हैं। तो भारत का एक ऊंचा इतिहास, एक भारत की एक ऊंची संस्कृति और हिंदू मुसलमान की जो मैत्री, सामुदायिक मैत्री, अनेकता में एकतापन, भारत का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कहते हैं अंग्रेजी में, अनेकता में एकतापन, इसका एक उत्तम उदाहरण भी होता है इस सबरीमला के उत्सव में। और अब ये हाथी के ऊपर भगवान हाथी के ऊपर जो भगवान का स्तंभ यानी कि दर्शन करने के वाले जो हैं उसको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। ये आगे अंदर जा रहा है। बीत रहा है और अब थोड़ी देर में मगर जोड़ी होने वाली है। इसके इंतज़ार के साथ पूरे भक्त लोग आके खड़े हुए हैं। वो ऐसा थोड़ी देर के बाद जब भंडारा होगा तो अचानक से आसमान पर एक ज्योति दिखाई देगी जिसको मगर ज्योति कहा जाता है। इसके इंतज़ार में पूरे भक्त लोग ऐसे खड़े हुए हैं। आज का इस साल का ये सबरीमला का जो उत्सव है, जो त्यौहार है, ख़त्म होने का आखिरी वक्त है और बड़ी ही बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं भक्त लोग दर्शन के लिए और मगर ज्योति का दर्शन के लिए। माना जाता है कि ज्योति का दर्शन करने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक इतना उजाला आ जाता कि अगले आने वाले साल में, आने वाली ज़िंदगी में इनको हर काम करने के लिए एक स्पेशल ताकत, जो हिम्मत, जो दिलेरी और जो हिम्मत चाहिए वो सब भगवान ने इनको अंदर दे देता है। इस मंदिर के पास घने जंगलों के अंदरों में बीच पहाड़ियों के ऊपर एक ज्योति अभी थोड़ी देर में दिखाई देने वाली है और इसके इंतज़ार में भक्त लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स वाले सब मिलकर बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हिफाजत कर रहे हैं। और पब्लिक भी, यानी कि जो भी भक्त लोग आए हैं, बहुत ही होशियारी के साथ पूरे प्रोटोकॉल को मानते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को दिल में रखते हुए हिफाजती के साथ दर्शन करके जाने वाले हैं। 15 नवंबर मंडल और 14 जनवरी के
ये मगरविलक्कु शबरीमला का प्रमुख उत्सव ये 3 महीने के करीबन का वक्त जो है मलयालम पंजाब के पहले 40 दिन के अंदर और विशुद्ध महायानी अप्रैल में इस मंदिर के पेड़ वाले जाते हैं। We are witnessing the different areas to which the procession carrying the ornaments, the Tiruvabharanam, which is to be adorned on the Lord, visiting. What we are witnessing here is the different stages of procession undertaken from the old Pandalam Palace en route to Sannidhanam. These are the ornaments to be adorned on the mountain Lord of India, Lord Ayyappa. Several devotees carry the ornaments on their shoulders and walk through the hills and the roads barefooted, carrying them till the Sannidhanam, where the priest adorns these ornaments onto the Lord, the idol of the Lord. En route to Sannidhanam from the old Pandalam Palace, this procession visits several temples, and one among such visit has been shown on your screen right now. Along the path of this procession, where this Tiruvabharanam is carried by barefooted devotees, lakhs of people assembled on both sides of the road to have a glimpse of the same. This is a much decorated event which goes on, which continues without losing its fervor, its ecstasy and devotion for centuries from now. Also, it's surprising to see that even the current situation of the rapid spreading COVID infection has not deterred the devotees from attending these events and making it colorful, devotionful and successful. These are the ornaments being carried. These are the scenes of the ornaments being carried. These are recorded events. These are the ornaments being carried, accompanied by the security forces of the Kerala police. Every arrangement is made on the road to see that everything falls in place at the right time. The visits of Tiruvabharanam to different temples is in fact a respite for those who are carrying them for kilometers and kilometers.
आभरणों की घोष